हेलो, ठीक है. Just want to show you. Okay. Initially, when you're building this diagram, you have to put the arrow on the links so that you know what is the direction of this thing. Right? When you're building it, you put the arrow. But when you are finishing it, then you have to just put everybody based on the precedence. How do you do the precedence? For example, you put the arrow, now you keep following the arrow. For example, this is 1, precedence 1, this is precedence 2 because this is the next one. Now from here the precedence 3 is this because this is the next one, and this is also precedence 3. Now how do you pick up the number of this precedences? Because it's only coming from one side, so therefore it is 3. Now if it was coming from two sides, then you could have picked up the bigger one. I'll just show you the one. For example, this is 2, this is 2, this is precedence 10, right? Why? Because from here it is precedence 3, but then from other places, since this is dependent on 13, so this was precedence 9, this is precedence 10. So therefore you picked up the name precedence 10 over here, right? From here you see this is coming as precedence 8, this is precedence 8, this is precedence 8. Therefore the bigger precedence is precedence 8, so you put the number over here. See over here, this is precedence 3, no, this is, okay, only one is coming, precedence 4. This is precedence 3 and this is precedence 4, right? This is precedence 4, so therefore this is precedence 4. So you keep putting a number at the node and find out which is the highest precedence. Number 4, एक्टिविटी नंबर 4 की बात करें. एक्टिविटी नंबर 4 किस जगह पे? ये ठीक है सर. जब बिल्कुल रॉ फॉर्म में होगा मेरे पास, हाँ, मैं जब इसको नंबरिंग करूँगा तो मैं ये भी देख सकता हूँ ना 1 2. ये देखिए ना, यहाँ से आ रहा है प्रेसिडेंस. दिस इज 4 डिपेंड्स अपॉन 14, राइट? सो यहाँ से आ रहा है जो वो है 3, लेकिन 4 also depends upon 12 and 4 also depends upon 13. So 13 और 12 से जो आ रहा है वो precedence 10 है. So इसलिए precedence 10 हो गया. ठीक है, सही है. ओके. नहीं, वो आगे वो खुद ब खुद होती जाती है ना प्रेसिडेंस कैलकुलेट. जब आप आगे चलते जाते हैं तो आपको प्रेसिडेंस, फॉर एग्जांपल इसकी प्रेसिडेंस कैलकुलेट करनी थी ना आपने, ये 5 है, तो आप एक इधर से इसका एरो आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो आप इस पर प्रेसिडेंस 4 थी, इस पर 5 थी, इस पर 5 थी, इस पर 3 थी. सो हाईएस्ट वाज 5, सो यू पुट इन 5 ओवर हियर. ठीक हो गया, सही है. ओके. नाउ जब ये आप प्रेसिडेंस सब पे लिख लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज को अपनी अपनी प्रेसिडेंसेस के ऊपर ले आते हैं. ये प्रेसिडेंस ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं आप. ठीक है. अब आप ये देखें, प्रेसिडेंस 2 की एक्टिविटीज सारी प्रेसिडेंस 2 के ऊपर हैं. जो 3 की थी वो 3 के ऊपर आ गई, 4 की 4 पे आ गई, 5 की 5 पे आ गई, 6 7 8 9 एंड 10. सो सारी की सारी जो एक्टिविटीज थी वो अपने अपने प्रेसिडेंस के ऊपर आ गई. सो दैट्स हाउ इट मेक्स अ वेरी नीट डायग्राम. क्या वो नहीं, वो किसी चीज़ से भी कनेक्टेड नहीं, वो तो खाली लोकेशन शो कर रहा है प्रेसिडेंस की. 7th प्रेसिडेंस पे ये लिख ले, 8th पे ये लिख लें, 9th पे ये लिख लें और 10th पे ये लिख लें. ठीक हो गया, कोई शक? थैंक यू. लेट्स एंजॉय द इफ्तारी एंड वी गेट बैक नेक्स्ट वीक. ठीक हो गया. नेक्स्ट लेक्चर 2 टॉपिक्स कवर करते हैं.